गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। सेशन में जो मेरा टॉपिक लिखा था दैट वाज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम व्हाट आई हैव ट्राइड बिकॉज दादा ये पीपीटी चालू है, अपने आप भाग रहा है, मेरे बोलने से पहले भाग रहा है। देखो, तो टॉपिक को मैं दिया था अ वेव ऑफ एक्साइटमेंट इन द फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री। अगर मुझसे हमारी फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री क्या उम्मीद करती है, क्या उसके एक्सपेक्टेशंस हैं, क्या यहाँ से गवर्नमेंट से उम्मीद करती है, क्या यहाँ की ग्रोअर से उम्मीद करती है। अभी जितनी स्पीड से भाग रही है मैं रोक देता हूँ स्लाइड को। कोशिश की थी मैंने इसको बनाने की कि एक इंट्रोडक्शन पार्ट हो जाए, अगरबोध का जो खेला है त्रिपुरा का, वो क्या इंडस्ट्री एक्सपेक्ट करती है उससे, क्या सोचती है उसके बारे में, और किस तरीके से कोलैबोरेशंस हो सकती हैं हम लोगों के बीच में, इंडस्ट्री के बीच में, फार्मर्स के ग्रोथ के बीच में, और किस तरीके से हम इसको आगे ले जा सकते हैं। इंडस्ट्री की अपेक्षाएं, एक्सपेक्टेशंस क्या हैं आपसे। यहाँ पे हम थोड़ा स्किप कर जाएंगे क्योंकि अभी सबने अगरवुड के बारे में बोला, बैकग्राउंड ऑफ त्रिपुरा, अगरवुड के बारे में बोला, इम्पोर्टेंस मैं बता सकता हूँ थोड़ी सी अगरवुड की जो हमारी फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री में। अभी जलान साहब ने बोला एज अ परफ्यूमर डिफरेंट वेरिएंट्स के, जब आप अगरवुड की हम बात करते हो जो हम यहाँ देख रहे हैं, बड़ा मुश्किल है किसी परफ्यूमर के लिए यहाँ पे आके अभी इस फील्ड में एनालाइज करना कि यहाँ 6 लाख रुपए किलो का भी अगरवुड का ऑयल दिखाया जा रहा है, 8 लाख का भी दिखाया जा रहा है, 10 लाख का भी है, 18 लाख का भी है, और एक यहाँ पे शुभम करके हैं मनोरमा एंटरप्राइज से, वो तकरीबन 2,40,00,000 रुपए किलो क्लेम करके अपने प्रोडक्ट को बेच रहे हैं, और इल्यूजन नाम दिया है उन्होंने उसको। तो एक परफ्यूमर या एक फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री वाला कैसे इवेलुएट करे इसको कि मैं जो प्रोडक्ट ले रहा हूँ 6 लाख का या 8 लाख का या 10 लाख का, वो प्रोडक्ट मैं सही खरीद रहा हूँ क्या, मैं 6 लाख रुपए दे के 3 लाख वाला तो नहीं खरीद रहा, 10 लाख दे के 8 लाख वाला या 5 लाख वाला तो नहीं खरीद रहा, क्योंकि ये इंडस्ट्री अभी एक्सप्लोर्ड इतनी नहीं है। अगर वो परफ्यूम्स में, फ्रेग्रेंस मैन्युफैक्चरिंग में बहुत सालों से यूज होता आ रहा है, लेकिन बहुत बहुत कम मात्रा में। अभी पिछले 3 से 4 साल में ये देखा गया है कि फ्रेग्रेंस इंडस्ट्री के अंदर बाढ़ आ गई है अगरवुड के प्रोडक्ट्स की। जहां आप देखो, चाहे फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, चाहे वो इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, जो नया यूथ हमारे बीच अब है वो अगरवुड को प्यार कर रहा है। और जब अगरवुड को वो प्यार करता है तो मैं जहां तक जान पाया हूं, जितना मैंने लोगों से मिल के समझा है, अभी उसने वो 100% नेचुरल अगरवुड देखा ही नहीं है। उसने टॉम फोर्ड देख लिया, उसने गुच्ची का देख लिया, उसने डियोर का देख लिया, या उसने जो दुबई में अवेलेबल है शेल्फ में, उनको देख के उसने अगरवुड की कल्पना कर ली और उसको अगरवुड मान लिया। अगर वो यहाँ आए उस यूथ में से, और यहाँ अगर वो अगरवुड ऑयल के फ्रेग्रेंस होंगे, तो 90% यूथ जो अगरवुड को आज की डेट में, मेरे पास कुछ नाम है, अब बताइए, वनीला ऊद कोई होता है? वो हम जैसे फ्रेग्रेंस वालों को बनाना पड़ता है वैल्यू ऐड करके, क्योंकि वो डिमांड में है, उसको मीठा ऊद चाहिए। अब ऊद मीठा कैसे होगा? तो वनीला ऊद बना दिया गया, रोज ऊद बना दिया गया, सैंडलवुड बना दिया गया, यहाँ तक कि अलग अलग बहुत बेहतरीन नाम रखी, जैसे मैंने एक नाम रखा ऊद कश्मीर। अब नो डाउट पहले उसमें केसर का टेस्ट दिया होगा, तभी वो कश्मीर की झलक देगा। कश्मीर में तो ऊद पैदा होता नहीं, लेकिन मेरा यूथ कहता है नहीं, मुझे कश्मीरी ऊद चाहिए। अब जब कश्मीरी ऊद मेरे यूथ को चाहिए तो एज अ बिजनेसमैन मैं तो बनाऊंगा, उसको बेचूंगा भी। इसी तरीके से आपने देखा होगा ऊद शमामा, अरे शमामा अलग चीज है भाई, ऊद अलग चीज है, लेकिन हमने उसको एक नाम दे दिया क्योंकि सामने वाले ने उसकी डिमांड की। अब परफ्यूमर क्या करेगा? डिमांड से तो भागेगा नहीं, वो क्रिएटिविटी बताएगा, इसको इनोवेशन बताएगा, चाहे झूठ हो। मैं एक ऊद बेचता हूँ जिसमें दूर दूर तक ऊद का कोई चिन्ह भी नहीं है, पर वो ऊद के नाम से बिकता है। आप यकीन नहीं करेंगे, 1490 रुपए किलो बेचता हूँ। अब यहाँ 8 लाख रुपए का ऊद देके अगर मैं 1490 किलो के ऊद से कंपैरिजन करूँ, यहाँ तो हमारे पीताम्बर वाले भाई साहब कह रहे थे कि 2 लाख रुपए और 8 लाख रुपए, आप तो 2 लाखों की बात कर रहे हैं, हम तो हजारों से ऊपर नहीं चढ़ पा रहे। तो प्रैक्टिकल जब हम मार्केट में जाते हैं, ये ऊद जो यहाँ बिक रहा है उसके खरीददार
कुछ पर्टिकुलर ही हैं जो फ्रेग्रेंसेस के रूप में ऊद इस्तेमाल कर रहे हैं। वो या तो हिना बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं या शवामा बेस्ड प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, या बहुत कम मात्रा में ट्रेसेस में अगर उनकी कंपोनेंट किसी फ्रेग्रेंस में हो, उसकी भी कॉस्टिंग नहीं आ सकती 15-20 हज़ार रुपए किलो से कम। तो कहाँ वो हमारा जब वो एंड प्रोडक्ट बन के निकलेगा तो वो बन के निकलेगा कम से कम 40,000-50,000 रुपए की एक बॉटल 100 ml या 50 ml। टॉम फोर्ड का खरीदने के लिए 28,000 रुपया मेरे मित्र यहाँ पे बैठे हैं वो खर्च करेंगे। लेकिन अगर अभी इंडियन फ्रेग्रेंस कंपनी डेनवर भी अगर एक कंपनी है जो निकाल दे 40,000 रुपए का वो, तो शायद उसको बहुत ताकत लगानी पड़ेगी, जबकि वो इतना रिसोर्सफुल है, मीडिया में पूरा प्रेजेंट है। जो छोटे छोटे प्रांतीय लोग हैं वो कहाँ से उस दूध को फ्रेग्रेंस में बेचेंगे जिनकी कीमत 30,000 रुपये 40,000 रुपये 50 ml की होगी। मैं या आप शायद वो खरीदते ही नहीं, हम सीधा जाएंगे डॉयर खरीदेंगे या हम गुच्ची शनेल इस तरह की चीज़ों के ब्रांड्स में जाएंगे और वो हम दूध खरीदना पसंद करेंगे। तो सबसे पहले इंडस्ट्री की ये एक इम्पॉर्टेंट एक्सपेक्टेशन भी है और ज़रूरत भी है कि हमें वो क्वालिटी, इवेल्युएटेड क्वालिटी मिले जिसका पैसा एक परफ्यूमर देता है। दूसरा, जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं मौजूद हैं वो अपने जितने भी रिश्तेदारों को, दोस्तों को अवेयर करें कि इंडियन फ्रेग्रेंसेस और इंडियन ऊद क्या होता है और उसकी वैल्यू क्यों ज्यादा है। मुझसे अभी एक मई में एक एग्जीबिशन हुई थी, हमारी एक्सपो हुआ था बॉम्बे में, तो केवीआईसी के एमडी साहब मिस्टर विनीत आए हुए थे। तो उन्होंने एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा, पता नहीं मैं क्यों मिला उन्हें सवाल पूछने के लिए, कि अरे रोहित, हम शैनेल वगैरह की तरह कोई इंडियन ब्रांड क्यों नहीं खरीदते। मैंने कहा तो आप ही बताओगे आप क्यों नहीं खरीदते। हम तो बनाने को तैयार है और हमारे यहाँ पे अच्छे फ्रेग्रेंस बनाने वाली कंपनियां एग्जिस्ट भी करती हैं, लेकिन वो बहुत छोटे लेवल पे रह जाती हैं। क्योंकि अगर हम किसी, अब आप टाइटन की फ्रेग्रेंस आती है, मुझे नहीं लगता 1000, 1200, 1500, 2000 रुपए की बोतल से ऊपर वो भी बेच पा रहा है, क्योंकि टाइटन इतना बड़ा ब्रांड है, टाटा की इतने शोरूम्स हैं, कितने सारे तो उनके पास रिटेल आउटलेट हो सकते हैं, पर वो भी आप 10,000 रुपए 20,000 रुपए का 50 ml 100 ml आप लोगों को नहीं दे पा रहे, क्योंकि जैसे ही वो क्रॉस करता है 3-4 हज़ार रुपए का एक बॉटल, वो आप तुरंत मल्टीनेशनल ब्रांड के ऊपर या किसी फॉरेन ब्रांड के ऊपर चले जाते हैं। तो ये अपनी थॉट प्रोसेस को हमें बदलना है अगर हमें इंडिया को कहीं स्टैंड कराना है। हम बदलेंगे तभी प्रोडक्ट बदलेगा, प्रोडक्ट बदलेगा तभी ग्रोथ होगी, तभी ये जो पीछे बाहर बैठा है इसका अदरवुड कहीं कोई परफ्यूमर क्वांटिटी में यूज करेगा, ट्रेसेस से बढ़ेंगे तभी ग्रोथ होगी। सिर्फ दुबई एक्सपोर्ट कर देना या यूरोप में एक्सपोर्ट कर देना अपने आप में एक साधन नहीं हो सकता है एक अगरवुड की ग्रोथ का, टिल यू गो इनटू अ वैल्यू एडिशनल प्रोडक्ट्स। यहाँ मैंने देखे जो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने शोपीस बनाए, कुछ और बनाया, आपको खींचा उन्होंने अपनी तरफ की हम देख पाए कि वो प्रोडक्ट्स क्या हैं। पर जब तक आप वैल्यू एडिशनल प्रोडक्ट जैसे कि यहाँ पे थ्रियगर के नाम से जो बनाए गए हैं, इनको कमर्शियली लॉन्च करके अवेयरनेस क्रिएट नहीं होगी, तब तक हम अगर उनको प्रमोट करने में कामयाब नहीं हो सकते। मैं पिछले बार अभी 1-1.5 महीने पहले यहाँ आया था और मैं दोबारा खिंच के आया यहाँ पे। मुझे त्रिपुरा इतना अच्छा लगा, अगरतला इतना अच्छा लगा है, ओवरऑल मेरे को यहाँ के जितने भी मुअज़्ज़िज़ गवर्नमेंट के लोग बैठे हैं, आई स्वेयर दे आर नॉट गवर्नमेंट के आदमी, ये मेरे दिल में आ गए हैं और ये इतने अच्छे लोग हैं, खासतौर से प्रवीण सर, खासतौर से सिद्धि सर। यहाँ डायरेक्टर मैम अभी मुझे शायद बैठी हुई दिखी नहीं थी, ये लोग इतने धरातल पे काम करने को तैयार हैं आपके साथ। ऐसे मैं इनसे घबरा के नहीं बात करता, दोस्त की तरह बात करता हूँ, वरना मैं बहुत सारी सालों से अलग अलग स्टेट्स के अलग अलग मिनिस्टर्स के साथ, कॉर्पोरेट ब्यूरोक्रेट्स के साथ मीटिंग्स करता हूँ, तो कहीं ना कहीं एक लाइन रहती है कि यार कहीं मेरी बात का बुरा लग गया तो। यहाँ तो मैंने प्रवीण सर से इतना खुल के मजाक किया, मैं तो हैरान हो गया कि यार ये सर हमारे ऐसे हैं कि इन्होंने तो दिल जीत लिया, तो कैसे यहाँ पे इंडस्ट्री नहीं लगाएगा आदमी। अरे फायदा होगा नुकसान होगा वो बात की बात है, लेकिन इन्होंने एक धरातल बिछा दिया है, हमारे लिए प्लेटफॉर्म दे दिया है कि भाई तुम लोग आओ यहाँ पे इंडस्ट्री को सपोर्ट करो और तुम्हें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, इंडस्ट्री को लेके आओ और यहाँ पे काम करो। मैंने तो एक वादा दिया था और एक सवाल पूछा था कि साइटस के तहत आप बातें करते हो,
मैं तो बिल्कुल अनभिज्ञ हूँ, मुझे बिल्कुल आइडिया नहीं साइट्रस क्या होता है और ये सब क्या चीजें चलती हैं, परफ्यूमर को इतना क्या लेना देना उससे। मैंने इनसे पूछा आपने एसओपी बनाई, 2 साल हो गए लेकिन 200 ग्राम एक्सपोर्ट नहीं हुआ। जिस दिन आप एक्सपोर्ट करा दोगे उस दिन वादा है मैं इंडस्ट्री लेके आऊंगा। और आप देखो ये कितने चालू हैं। 5 तारीख को इनॉग्रेशन था, 3 तारीख को इन्होंने 2.5 किलो का अप्रूवल दिला दिया। और इन्होंने मुझे मजबूर किया कि यहाँ इंडस्ट्री में बैठे मेरे मोअज़्ज़िज़ दोस्त, उनमें से कम 8-10 ऐसे सक्षम यहाँ बैठे हैं जो अभी इसी वक्त इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बस थोड़ा सा घर में शायद बड़ों से पूछना होगा। और मुझे लगता है कि जब ये कल विजिट करके आएंगे तो इनको अपने आप एक इतना अच्छा लगेगा धर्मनगर जाके, उनके पूरे प्लांटेशन आगे जाके देख के कि कहीं ना कहीं ये यहाँ से जुड़ेंगे। चाहे वो अपनी एंसिलरी यूनिट डालें, चाहे टाई अप करें, मौजूदा किसी न किसी यूनिट से टाई अप कर ले तो भी चलेगा, या अपने वैल्यू एडिशनल प्रोडक्ट्स यहाँ बनाना चाहे तो बनाएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडस्ट्री की 8-10 यूनिट्स आपको विद इन अ स्पैन ऑफ 1 to 2 ईयर यहाँ त्रिपुरा में लगी हुई 100% दिखेंगी। हो सकता है कि कोई मुझे घसीट के लाए तो शायद मैं भी किसी के साथ जुड़ जाऊँ। और ये मैं चाहता हूँ कि इस पे ताली बजे हमारे ग्रोवर्स के लिए। थैंक यू ग्रोवर्स, आपने इतना सपोर्ट दिखाया। एंड डेफिनेटली थैंक यू फॉर आवर टीम जो यहाँ बैठी है हमारी गवर्नमेंट की। अब मैं प्रेजेंटेशन बढ़ा लूँ। इस प्रेजेंटेशन को देख लो आप लोग, इसमें मैं क्या ज्यादा दिखाऊंगा और क्या ज्यादा बोलूंगा। भावनाओं में बोलता हूं मैं, मुझे इन सब चीजों की आदत है, पर मुझे कहा गया कि नहीं भाई सब होंगे तो प्रेजेंटेशन होनी चाहिए। दादा इसे आगे करो। एक्सपेक्टेशंस के बारे में तो बताया, तो एक चीज और खास तौर से आप लोग इस चीज को जरूर ध्यान रखो जो मैं बार बार बोल रहा हूँ। यहाँ मुझे एक कमी दिख रही है प्रवीण सर, खास तौर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। सर आप बैठे हैं सेठी सर, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा। सर आप लोग अंदर तो कोशिश कर ही रहे होंगे कि लेबोरेटरी स्टैब्लिश हो, पर किसी ना किसी तरीके से यहाँ एक ऐसी अच्छी लैब क्रिएट करिए ताकि COA और GCMS ये 2 ऐसे आकलन अमूमन तौर पे बायर जो है बाहर का वो मांगता है, परफ्यूमर भी मांगेगा, वो अपनी GCMS जरूर करेगा लेकिन वो एक इनसे आकलन मांगेगा। उसी आकलन के बेसिस पे कहीं ना कहीं उसको पैसा दिया जाएगा और उसकी क्वालिटी असेस की जाएगी। हालांकि मैं आप सबको एक चीज और बता दूं, मुझे नहीं पता है कितने लोगों को पता है, FFDC को गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ने एक प्रोजेक्ट दिया है जो कि इसके स्टैंडर्ड बनाने का है, और अप्रोक्सीमेटली 6 से 8 महीने में ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड में वो प्लेस हो जाएगा इन लोगों के माध्यम से। और फॉर्चुनेटली हम सब, मैं भी खास तौर से पिछले 15 साल से ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक पैनल पे हिस्सा रहा हूँ। तो जैसे ही अगर उनका स्टैंडर्ड हमारे यहाँ पे सर्कुलेशन में आएगा, कोशिश की जाएगी कि उस सर्कुलेशन के 3 महीने के अंदर एक स्टैंडर्ड बना दिया जाए, ताकि जो अभी मेरे इसमें लिखा हुआ है त्रिपुरा का गवर्नमेंट क्यों अच्छा, मैं उसमें बोलूंगा ही नहीं त्रिपुरा का गवर्नमेंट क्यों अच्छा, क्योंकि त्रिपुरा, आसाम या कोई भी हमारा प्रांतीय, अब कर्नाटक, केरला, तेलंगाना की बात हो रही थी, वहां वो चाहे दिल्ली हो या आने वाले टाइम में जो अरोमा पाक आ रहा है काशीपुर में, वहां ग्रो किया हुआ अगर वो जैसे रोज ऑयल, जैस्मिन ऑयल, हमारे क्रू केवड़ा, ये एक स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट के तहत बेचे जाते हैं, चाहे वो किसी भी हिस्से का हो देश के। इंडियन अगर वो ऑयल के नाम से वो बिकेगा ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड के स्टैंडर्ड्स के नीचे। और मैं चाहूंगा कि ये जो हम डिफरेंशिएट अभी आज भी कर रहे हैं, क्योंकि हम त्रिपुरा में हैं, नो डाउट हम त्रिपुरा के बारे में बात करेंगे, पर हम इसको प्रमोट करेंगे पैन वर्ल्ड। इंडियन अगरवुड ऑयल स्टैंडर्डाइज्ड बाय FFDC अंडर BIS थ्रू गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा, और तभी हम ग्रो करेंगे, वरना हम बढ़ के ग्रो नहीं कर पाएंगे। मुझे प्लांटेशन के बारे में बहुत नॉलेज नहीं है, लेकिन मैं मार्केट को थोड़ा सा जानता हूँ। तो जैसे अभी हमारे सर जिन्होंने बोला था, मैं नाम भी भूल गया उनका, सुमित सर थे जिन्होंने अभी इनकॉर्पोरेशन के बारे में बोला था। उन्होंने जो बोला कि फ्रेग्रेंस को देखा जाता है, और ये 100% सत्य है। हम भी यहाँ पे एक नोज आई थी, जिबुला कंपनी एक आर्टिफिशियल नोज लेके आई थी 10-12 साल पहले। हम लोग भी बड़े उत्सुक थे, देखने जाते थे, उनकी कंपनी में असेसमेंट करते थे। लेकिन जो भगवान ने हमें नाक दी है ना, उस नाक का जो कनेक्शन हमारे दिमाग से दिया है, उससे अच्छी इवैल्यूएशन मशीन नहीं है।
हमारी प्रोसेसिंग के लिए वो इवैल्यूएशन मशीन है, लेकिन गवर्नमेंट के हिसाब से, एक्सपोर्ट के हिसाब से, यूसेज के हिसाब से, मार्केटिंग करने के हिसाब से हमको सीओए और जीसीएमएस की रिपोर्ट मैंडेटरी होती है, जिसके लिए मैं यहाँ बैठे हुए मौजूद हमारे सब लोगों से रिक्वेस्ट कर चुका और उम्मीद है बहुत जल्दी ही आएगा। कोलैबोरेशन के बारे में मैंने बात की कि हम जितने भी यहाँ बैठे हैं कोशिश करें एक दूसरे की बाह पकड़ के आगे बढ़े। जहां जिनके पास फार्मर्स के पास अपनी यूनिट्स है वो ट्रेडर्स के साथ या मैन्युफैक्चरर्स के साथ कोलैबोरेट करें और अपने प्रोडक्ट्स को बढ़ाएं, और जो भी पूरे पैन इंडिया में लोग यहाँ आ सकते हैं वो इनसे टाइप्स करें, और टाइप्स से ही दुनिया चलती आ रही है। क्वालिटीज ऑफ फ्रेग्रेंस ये हम अभी छोड़ देते हैं क्योंकि इस पर काफी बात हो चुकी, और मैं इसी के साथ विराम लगाऊंगा अपनी वाणी को। और मैं बहुत 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 दिल से धन्यवाद देता हूं हमारे गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा के बैठे सारे मुअज़्ज़िज़ लोगों का, और यहाँ जितने भी मेरे ग्रोवर्स आए हुए हैं, फार्मर्स आए हुए हैं, जिनसे मैं पहले मिला, और मेरे सारे इंडस्ट्री के दोस्त, कि हम इसको एक कामयाब अगरवुड इंडियन प्रोडक्ट बनाएंगे। और अगली जब 4th बायोफेयर मीट होगी तो प्रवीण सर खुद खड़े होकर कहेंगे कि रोहित जो बोल के गया वो एक साल में सर के माध्यम से, सेठी सर के माध्यम से साकार हुआ। थैंक यू सो वेरी मच। Thank you, Rohit sir. Now, I would invite Shakti Vinesh for such. Honorable Chairman Sethi Sahab, thanks for inviting me to deliver a lecture on challenges and prospects of processing of value addition in agricultural sector. Special thanks to Mrs. Praveen Agrawal for making me to be here in this hall. Third time within a span of less than a year. I was here on 21st November 2022. Then I was here at the roundtable meeting, and then again over here for the same. The agenda of the today, I will be covering few of the aspects. Initially, I will be talking about the challenges which does have the existing processing which has on it. Looking into those challenges, I have tried to cover the proposed modification which does exist, which is supposed to be done. Then what are the prospects are there when we are going ahead for the processing. Then I will be discussing about the challenges which we do have during the course of value addition, and definitely some of these aspects are those challenges which are going to be taken care by my friend Dr. Ravi Pant, who is from CSIR IITR. And then finally the prospects of value addition into this sector. This is an overview which all of us the time duration and kind of an oil one get this overview, but it has been already covered. Moving ahead further, this has been already taken care by, I thought this somebody will go cover, I will go throw much light, but it has been done by my friend Mr. K.K. Singh regarding the different varieties which we do have. Agarwood altogether 17, where one is taken care by then in India and another is in China. Now, basically, I will be talking about the challenges which we do have as on date. If you are going tomorrow into the field, you will be getting time to see. The moment you look into the kind of distillation which exists, it's fairly crude and is done primarily by hydro distillation. I tell you, in Kannauj, we have been using hydro distillation for sandalwood oil prior to 1921. We are prevailing in the same era here in Tripura even today. The material like sandalwood, cedarwood, nagarmotha, vetiver, pacholi are supposed to be done by steam distillation, not at all by hydro distillation. It was done in Kannauj. In 1920, a unit was imported from England, and subsequently 23 more units came into the Kannauj for sandalwood distillation, and as on date
entire industry does know sandalwood has to be done invariably. Everybody says steam distillation. But here it is done by hydro distillation. Definitely. Yield is going to be poor. Techniques, as you look into the photographs, this has been taken by me during the course of my visit, it's quite primitive. Then, if you look into the furnace, which they use, is highly energy inefficient. Nearly, in my opinion, it is very similar to what they have been doing it for traditional Deccan Bakka system in Kannauj. It's more than 50 to 60% fuel is being lost without being utilized by the unit. The entire furnace not has to be designed, it has to be rebirthed at what I mean to say. Then, if you look into the setup, there is a leakage, there is improper collection of the oil, it's fairly open. There is a loss of oil from there itself. When we talk about to the industry, either here, there is a fairly rough information about the yield of the oil. There is a rough estimate, and that is the reason not much information is open, and that is the reason there is a variation in price. Somebody says कि मेरी yield कम आती है, मेरा material बढ़िया है, इसलिए महंगा है, मेरी उसकी ज़्यादा आती है, इसलिए उसका सस्ता है. But that kind of information doesn't prevail. Then the post-harvest techniques. They used to put this for a month or over. Definitely, they have to. If you are going to go for hydro distillation, you are forced to soak it so that the very less potent steam could able to penetrate and you could able to rupture the cell walls where the oil cell glands are located, and that is the reason you are investing good amount of time and money into it. If you are doing a steam, this will not going to happen. So that is the reason they do it. They used to keep it for a pretty long time. That is being happened. So this is what then there are modifications which are supposed to be done. In these cases, the steam distillation is need to be optimized. The furnace needs insulation, which is not right now. There is no chimney in any of the distillation. There is supposed to be a chimney to have make it more efficient, which is not there. That has to be done. There is need to be baffled to have a proper flow of the entire heat, which is not done. Then the mode of proper heating has to be there, so that the proper burning of the fuel has to be done in presence of air, and for that a proper system has to be designed, and finally the heat transfer and circulation has to be designed, and that's why I was saying the furnace has to be rebirth has to be taken. Then when we look into the condenser, this is again need to be modified and supposed to be of the tubular type, which is normally being utilized by the steam distillation technique. The heat transfer needs to be again calculated and has to be made proper. The leakage even does exist as on date. That has to be stopped, and circulation and cooling arrangement for water needs to be again made proper. Again, there are few more things. Then the loading tank again needs the insulation, the leakage has to be done, and arrangement to pass steam has to be done. And then there are a few general conditions which I looked upon. It's fairly unhygienic. The inlet and outlet of the collection of the water is fairly improper, and similarly is the case with collection and separation of the oil. That is not done proper. The system doesn't exist for that. Now there are prospects. What could be done? There are a lot of things which does prevail. Something, if you look into it, we could able to produce oil by a hydro distillation, which is being done as on date. There is a limited use, but definitely it could go right now in the area of fine fragrances and flavor. Rohit said a number of my friends from industry are there, they understand and they are using it. Then you can have, after the oil extraction has been done, again it can be solvent extracted. We have done this in Kannauj for sandalwood. We could able to get nearly 1.8% of resin oil from sandalwood. The same can be done over here, but definitely we could have able to have a
agarwood resin oil, and definitely this could be used more for fragrance stability, can be used for flavor purpose if we go for a solvent extraction technique. Supercritical is yet to be explored to see to what extent it could be commercially viable, but the possibility does exist, and we need to look into those aspects. That is one of the innovation, but again, its viability has to be checked out. Then, out of the de-oil material also, we could able to have a cheaper resin oil when we can use for cheap fragrances and flavor. Then the de-oil material, again the supercritical extraction can able to take place, and again we could able to have a cheaper material from there. So these are the prospects which does exist, only is happening right now. So the possibilities are there, and we could able to proceed if we look into these issues. Then where we could able to use these material potentially, if you are having the potential exists in respective 4 areas. One is you could be able to think about its using in flavors, another is the fragrance, then in aromatherapy, my expert Dr. Renuka has arrived and she will be talking about aromatherapy. Even in the first session, there was a fairly good information was taken care where this could be used in aromatherapy, and above all, it could be used in a number of products as well. A lot of work has been done here in Tripura as well. So these are the 4 potential prospects where this material can be used. Then, the moment you are using these material, these are the products where value addition can be done, and we can think about using the de-oil material for making agarbatti and dhoops and cones. We can think about using them in a different of cosmetic products as well. Dr. Renuka will be deliberating more, so I'm not taking much time on these aspects. Then a number of other perfumes which Rohit has said, I'm just showing you some of them which are there. There are much more which does prevails as on date. A number of perfumes are popular and people are using it into different products. Now, in the last 1.5 years, after coming in touch with the government, particularly with the forest department, we have done some of the aspects. One is we have made agarwood oil based perfumes. Then we are working, as said by Mr. Sudhir said, we are working for the agarwood oil standardization, and definitely the moment this is going to done, the issue of the people, those who are selling wood, not getting a proper price, there is no more how you could able to take a decision what price of the wood should be there. The moment this is being done, standardization is being done, once the oil is being extracted out of this by a lab, the price for wood can be decided, and definitely the farmer could able to get a proper price, and the improper price or not getting a proper money would be definitely going to be stopped for wood, and simultaneously this would going to happen for oil too. Definitely because of lack of knowledge, people are saying this is less price, some is another on a higher price. Definitely, the moment you say it's about a crore or two, it's only because of lack of information and people are not aware. And definitely we need to understand there is a difference between B2B and B2C price. So those who are talking about crores, it could be a B2C price, and you might be selling about a limited amount of material into the market, but that price not at all exists, and you won't able to compete into the global market. And the moment we are working on this standardization, we need to compete with Cambodia, with Laos, and with other countries. Otherwise, we can keep on saying this is good and all that, but definitely it would be very difficult for us to compete into the global market. Then we have developed the de-oil agarwood-based agarbatti. This is the first time, it's a matter of proud for Agartala and Tripura that this would be the first time in India where really an agarbatti would be containing agar. Otherwise, there was agarbatti, but it was not having agar. So this is the first time, and it is going to be done. Apart from that, we have been working on developing human resource as well, and some of the tasks which we have done in the past. Last year, it was the same place where this 5 agarwood oil-based perfume was gone by Honorable CM sir, Seni Sir Nagawal sir was there. I'm really thanks that they've given a chance to FMDC to
work on these a product, and it was launched here. Subsequently, the story doesn't end. Within a span of 4 years, we could able to have number of other versions as well, that we could able to understand how fast they are working and how we are in touch with the market to make it move and go ahead. Apart from that, we rendered training program recently 2 months back at Dhanapur for the de-oil agarwood, and we developed the technology for the formulation, and we trained 25 people as well, and that is what we have done till now. There is my email ID. If you got any doubt, you are most welcome. You could be in touch with us. If there is any question, I am open for that. Thank you. Thank you, Shakti. I will invite Praveen Agarwal sir to take it. Good afternoon. I don't have any presentation as such. And most of the things which I want to speak already taken care by the doctors, Mr. Swrangchati. My topic is what are the possible products which can be developed from agro sector. I am working on this agro sector because my main intention is we should shift from our oil producing to oil and chips producing to something more, so that we should not always depend on the export, and our Indian community should also take some advantage of that. And on that basis, we started studying and we started developing some of the products, and still there are many products which can be explored because all investors are sitting here and many investors are from outside also. So just to have a glimpse in what are the possibilities of different products, I have attended my previous speech, but most of this is already covered. As you know, first and foremost important is the perfumery. As perfumery is the main product being used everywhere, and if you see top brand or all top brands do contain some food, and that's why perfumery is the first and most important. And we have already started developing. We have prepared our first brand, and we are working on it. Second is incense, because mainly agar is, agarbatti is also from agar, and incense is the main. And in Gulf countries, GCC countries, many people are using these chips only for as a incense purpose. They will directly burn. And it is being said that it gives the stress relieving and anxiety relieving properties it has, and you can, and that's why many people and many all programs they are using the incense as such. Third is most important, where I want everyone to concentrate, and I request all the research organizations which are attended from the different part of the country, like ICFRE from National Botanical Survey of India and other organizations, they should try some research on its medicinal value of the root, which we found that as far as the root concerned, in Korea and China and Japan, these agar is used only for medicinal purposes. In large quantity they are using. We know from Vietnam, container of hydrosol is going only for medicinal purposes to these countries. So our research from this, specifically from Ayurveda industries and from other industries, we require to do research and to use this traditional for traditional medicine. We have been told there are research documents available, and in the morning also it has been told by Invest India madam that all the religions there is a mention of this agaru, and mainly that purpose is only for medicinal value. As mentioned, it is a stress reliever, it is a mental health, and it is anti-inflammatory, it is antioxidant. There are many things we can know about agaru, and we request they should be more and more R&D to find out the exact uses and how to take the medicine, how to convert it to medicinal property like tablets or any other forms, and what are the doses to be consumed. That research is required, and what are the health benefits. Another aspects of the would be cosmetics. We have also started working on the cosmetics, and there are creams, there are serums are available, and we are also trying to produce the serums. And we request all the investors to also work on the cosmetics.
recently we have one guest. She came directly from Mumbai to. Today only she started from Mumbai to Bangalore, Bangalore to Agartala. She just reached and she will be giving her talk on this subject in the afternoon session. I welcome her because of her busy schedule also she managed to come here and she will give on details on the cosmetics what this uses of agarwood and cosmetics. Then there is a use of cosmetic agarwood for flavoring industry. As you know, famous all the pan masalas. I have been told the pan masalas are using the agarwood for flavoring purposes, and many culinary traditions also they are using this agarwood for the as a flavor. That required to be further research and have to see what are the uses and what are the advantages and how can it be this can be developed in India. That can be also one of the product which one can think of it. And just for your surprise, generally you used to say agarwood the more important item is that black portion that is resin that is more important that is sold. But you will surprised to know the white portion of the agarwood is very soft in nature, and that are being used for carving purposes. And for that purpose, many countries the agarwood carving is also very famous, and they can use for decoration of the home and for preparation of some crafts, and that is also can be explored if we get the help from major craftsmen. That can also be possibility of the use of agarwood, and for that also we require some research. Then for jewelry purposes, you will surprise to know that agarwood is also used for jewelry purpose. Beads are very commonly used in agarwood. People are using the beads and in hand beads also there they are doing. It is being told why they are using the beads, because when they go to the suppose in the forest or wherever and say they feel their stomach is upset, they just take the beads and they just eat it, and their stomach problem may be solved. Because of that reason, they used to start using these beads and necklaces, etc. Since old traditions, and that can also be one of the important use. And then there is I already discussed aromatherapy. For aromatherapy, there are agarwood candles also being in the market available. That can also be tried in different ways. Agarwood teas and beverages are also we have also attempted that can also be tried by we need further research. And I just want to inform you that one of the investors who is here in this all is only invested to make this agarwood tea, and that is the scope, and that's why we want to see how agarwood is being taken interest, or people are taking the interest on the agarwood. Then very important is the skin products. Agarwood is also used for the skin products. There are literatures which shows they are being psoriasis and other skin products, skin problems are being solved using the agarwood products, and that further research is required. And if some organizations can come forward, that will be also helpful. Agarwood is also used for hair care products. In the morning, someone told me the hair care products also that we can prepare the shampoos and we can prepare the soaps, etc. using the agarwood, and that helps in agarwood and hair growth and hair health. And then there is smoke therapy. Aromatherapy is already told for aromatherapy. There is a special use of smoke therapy where for stress relieving it is being used. And last but not least, digestive health also is very useful. Suppose take the example of other hydrosol which are already being developed. Yesterday also one entrepreneur from Tripura have developed this other hydrosol is selling also here. And that hydrosol is very useful for digestive purposes. And these are some of the uses or possible uses of the agarwood where we require a lot of research and development, and we are working on it. We have one project, Government of India project on element where there is a special component for the R&D. We will try from our side, but we also want your help. We are open to have partnership. We are open to have MOU for getting involved in development of some or other research and research activity on this sector. That's all from my side. Thank you. Thank you, sir.
such fabulous light on the topic actually, sir. Now the floor is open for discussion. I would now invite Mr. P.P. Meena from MSME Ministry for his deliberation. सभी को नमस्कार। रेस्पेक्टेड पार्टिसिपेंट, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई की तरफ से मुझे सेक्रेटरी साहब ने इनवाइट किया, यहाँ नॉमिनेट किया है। मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई जो है वो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज है, और इसका जो नया डेफिनेशन है उसमें माइक्रो लेवल का इंडस्ट्री वो होगा जिसका इन्वेस्टमेंट प्लांट एंड मशीनरी में 1 करोड़ होगा, टर्नओवर 5 करोड़। स्मॉल इंडस्ट्री वो कहलाएगी जिसमें इन्वेस्टमेंट 10 करोड़ का होगा, टर्नओवर 50 करोड़। मीडियम इंडस्ट्री वो होगा जिसमें इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ और टर्नओवर 250 करोड़ का होगा। तो जो डेफिनेशन है ये जुलाई 2020 से नया डेफिनेशन आया है। तो अभी आपका जो अगरवुड का इंडस्ट्री है वो फाइल करता है माइक्रो इंडस्ट्री में, और माइक्रो इंडस्ट्री को जो है प्रमोट करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई आपको जो है फाइनेंस फैसिलिटी देती है। जो इनिशियली लेवल पे हमारा पीएमईजीपी स्कीम है जिसमें आपको 50 लाख रुपीस तक फाइनेंस आपका प्रोजेक्ट का लोन होता है, उसमें 25 to 35% सब्सिडी होती है। नेक्स्ट होता है अगर आपका प्लांट एंड मशीनरी का कॉस्ट ज़्यादा है तो उसके लिए क्रेडिट लिंक कैपिटल सब्सिडी जो हमारा स्कीम है उसमें 1 करोड़ तक का अगर आपका मशीन परचेज करते हो तो 15 लाख रुपए का सब्सिडी है। सबसे बड़ा इशू आता है बैंक के पास की गारंटी का इशू होता है। पैसा तो मिल रहा, बैंक देने को तैयार पर गारंटी मांगता है, और एंटरप्रेन्योर के पास गारंटी नहीं होता है। उसके लिए हमारा नया एक दूसरा स्कीम है CGTMSE, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फंड ट्रस्ट फॉर एमएसएमई के लिए। इसमें आपको आपका जो भी प्रोजेक्ट का कॉस्ट है उसका 75% तक का जो आपका फाइनेंस होगा उस पर गारंटी एमएसएमई देता है। 25% गारंटी आपका होगा, तो आपके लिए बैंक से लोन लेना इजी हो जाएगा। उसके बाद जो हमारा स्किल डेवलपमेंट स्कीम है, ESDP स्कीम है, अभी अगर उनकी बात हो रही थी और स्किल डेवलपमेंट की बहुत बड़ी बात हो रही थी, तो एमएसएमई जो है आपका जो भी वर्कर है उनको ट्रेनिंग देता है। ट्रेनिंग के बाद आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और सर्टिफिकेट बेस पे आप अपना इंडस्ट्री जो ऑयल का प्रोडक्शन जो करना चाहे वो आप कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम हमारे पास है स्फूर्ति स्कीम जो है वो, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वर्क है, पुराना परंपरागत चल रहा है और अगरतला के साथ जुड़ा हुआ है। तो इसमें अगर आपके पास 100-200 वर्कर हैं तो उनके लिए स्फूर्ति क्लस्टर में आप लोग उनको स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग भी हो सकता है, मशीन भी मिल सकता है, पैकेजिंग भी होगा और ट्रेनिंग भी होगा, स्टोरेज भी होगा। तो स्फूर्ति क्लस्टर में आप लोग उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। दूसरा एक सबसे बड़ा इशू चल रहा था कि सर हमारा एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर आपको अगर अगरतला में चाहिए अगर उनके लिए, तो हमारा MSc CDP जो स्कीम है क्लस्टर डेवलपमेंट, उसमें हम आपके लिए जो है एक कॉमन फैसिलिटी सेंटर जो होगा उसमें आपका टेस्टिंग होगा, ट्रेनिंग होगा, पैकेजिंग होगा और इवन मार्केटिंग के लिए और एक्सपोर्ट के लिए। ये कॉमन फैसिलिटी सेंटर हम त्रिपुरा में बना सकते हैं अगर आप एक प्लेटफॉर्म पे आकर के एमएसएमई के साथ जुड़ते हैं। तो MSc जो आपका CDP क्लस्टर है ये बहुत अच्छा है, वो ऑल ओवर इंडिया में हमारे काफ़ी क्लस्टर बन रहे हैं। इसमें बेनिफिट ये होगा कि इंडिविजुअल जो है इतना कॉस्ट बेयर नहीं कर सकता, तो MSME उसका कॉस्ट 90% तक बेयर करेगा, क्योंकि NER स्कीम में 90% है और अदर के लिए 80% है। तो 90% कॉस्ट MSME बेयर करेगा, बाकी को 20% आपका जो 10% कॉस्ट है आपको स्टॉक होल्डर को लेना है। तो ये स्कीम बहुत अच्छी है आपके लिए। नेक्स्ट इसके बाद में डिजाइनिंग स्कीम अभी हमारे FMDC वाले क्लस्टर में बड़ा अच्छा होता है। आपको देखिए आपका जो इत्र है ऑयल है
वो आप बहुत अच्छा बना रहे हो, लेकिन अगर उसका पैकेजिंग और बोटलिंग, क्योंकि आजकल जो दिखता है वही बिकता है, अगर वो चीज़ नहीं है तो हमारी वैल्यू नहीं है। ब्रांडिंग वहीं से स्टार्ट होती है। तो ब्रांडिंग के लिए डिजाइन के लिए स्कीम जो हमारी बहुत अच्छी है, उसमें 60-40 का रेशो है। 60% को एमएसएमई बियर करेगा, 40% को आपने बियर करना है। आपका प्रोडक्ट का जो पैकेजिंग है उसका डिजाइनिंग करने के लिए ऑल ओवर इंडिया 4 नंबर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग है, आप उनके सहयोग से अपना प्रोडक्ट का डिजाइनिंग करवा सकते हैं। बोटलिंग है वो भी करवा सकते हैं, और जो कॉस्ट होगा उसका एमएसएमई 60% बियर करेगा। इसके बाद हमारे पास लीन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम है। वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी हम लोग एक बंच के रूप में लेके आए, जहां आपका फ्लोर स्पेस उसका सिस्टमेटिक डिजाइन करना, वेस्टेज को रोकना है, टाइमिंग साइकिल को कम करना है। तो ये लीन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम का भी बहुत बड़ा पार्ट है। उसका 80% कॉस्ट एमएसएमई बियर करता है, 20% आपको बियर करना है। इसके बाद हमारा जो है नेक्स्ट है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, आईपीआर। क्योंकि अभी बहुत सारी बात चल रही थी कि डिफरेंट टाइप का ऑयल का प्राइस अलग अलग हो रहा है, तो क्वालिटी के लिए और आपका ब्रांडिंग के लिए, क्योंकि आपका ब्रांड अगर नहीं है तो इंटरनेशनल मार्केट में आप किसके नाम से बेचोगे? अधिकांश जो माल हमारा यहाँ से बिकता है इंडिया से, वो थर्ड पार्टी के थ्रू जाता है। तो फॉरेन कंट्रीज में थर्ड पार्टी को जानते हैं, ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर को नहीं जानते हैं। तो एमएसएमई चाहती है कि आपका अपना खुद का ब्रांडिंग हो, आपका अपना ट्रेडमार्क हो, आपका अपना लोगो हो। दूसरा है कि अगर आपने इसमें इनोवेशन किया है, आर&डी किया है, और अगर आपका वो पेटेंट के लायक है, तो आपका जो इनोवेशन है उसको आप पेटेंट करवाइए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट में। आपका जो नेशनल लेवल का पेटेंट होता है उसका जो कॉस्ट 1 लाख रुपया तक होता है, उसका 75% कॉस्ट एमएसएमई आपको रिटर्न कर देता है एज ए सब्सिडी। अगर आपका प्रोडक्ट आप किसी फॉरेन कंट्री में सप्लाई करने जा रहे हैं, तो आपका जो राइट है उसका कॉपी ना, डुप्लीकेशन ना हो, ब्रांडिंग आपका चेंज ना हो, उसके लिए इंटरनेशनल ट्रेडमार्क भी आप लेते हैं तो उसका 2 लाख रुपए तक कॉस्ट बैठता है। उसका 75% कॉस्ट आपको एमएसएमई एज ए सब्सिडी वापस रिटर्न कर देता है। अब प्रॉब्लम होती है सर हमने प्रोडक्ट बहुत अच्छा बना रखा है, लेकिन हमको इंटरनेशनल मार्केट में पता नहीं कैसे जाना होता है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई का प्रोक्योरमेंट एंड मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम है, पीएमएस स्कीम। उस स्कीम के तहत आप लोग जो है साल में एक बार इंटरनेशनल ट्रेड फेयर, जिसको मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई स्पॉन्सर करती है, आप वर्ल्ड के किसी भी कंट्री में जाकर के अपना प्रोडक्ट का मार्केटिंग कर सकते हैं। उसका जो कॉस्ट होता है वो 2 लाख रुपए तक का, वो मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई आपको सब्सिडी के रूप में रिटर्न करता है। इसके अलावा अब सबसे बड़ी बात होती है कि सर हमारा जो है त्रिपुरा नॉर्थ ईस्ट में पड़ता है, दिल्ली का कोई आपका ट्रेडर है, आपसे माल लिया, आपने माल दे दिया, 10 लाख का माल ले लिया, सर पैसा नहीं दे रहा है। तो उसके लिए हमारे पास चैंपियन पोर्टल है, एमएसएमई का चैंपियन पोर्टल नया आया है, और एक समाधान पोर्टल है। आप एमएसएमई के चैंपियन पोर्टल पे जाकर के अपना ग्रीवेंस को डाल दीजिए कि मेरा पैसा फंसा हुआ है। वो पैसा जो है एमएसएमई आपकी हेल्प करेंगे और आपको पैसे दिलवाएंगे। दूसरा है कि अगर आपको कोई मशीन नहीं मिल रहा है, वर्कर नहीं मिल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट से प्रॉब्लम कर रहा है, तो उसके लिए चैंपियन पोर्टल है, आप उस पर कभी ना कर सकते हैं। क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में त्रिपुरा, आसाम के गुवाहाटी के बाद सेकंड बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, साथ में बांग्लादेश, म्यांमार भी हमारा नजदीक लगता है, और बांग्लादेश का भी आई थिंक बॉर्डर खुलने वाला है। तो एक्सपोर्ट की फैसिलिटी आप एक संभावना बहुत ज़्यादा है। और मैं अभी नया आया हूँ, 6 महीना मेरे को हुआ है लगभग। मैंने यहाँ देखा कि ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होता है, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होता है। और मेरे पास जो बात है सर एमएसएमई का बेनिफिट लेना है, मेरा ट्रेडिंग को छोड़िए, इसको मैन्युफैक्चरिंग में आ जाइए। मेडिसिन आप बाहर से मंगाते हैं, पैकेजिंग के आपको फैसिलिटी नहीं है, तो आपका ब्रांडिंग नहीं है ना, आप थर्ड पार्टी से लेकर आप काम कर रहे हैं। आप अपना ब्रांड बनाइए, यहाँ मैन्युफैक्चरिंग कीजिए, उससे क्या होगा, स्टेट गवर्नमेंट को रेवेन्यू मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, और आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है अभी 30 में आपसे थोड़ा सा मार्जिन होगा, जब आप खुद बनाएंगे तो इसका मार्जिन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। और फॉरेस्ट का जो 75% आपका एरिया फॉरेस्ट से कवर्ड है, तो इसका फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, इसमें आप बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। अगरबत्ती का जो स्टिक आता है अभी चाइना से आ रहा है, हम लोग उसको रोकना चाह रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारा बैम्बू स्टिक है, बैम्बू का बनाइए। तो क्योंकि टाइम शॉर्टेज है, बाकी हमने ब्राउजर आपको सबको दे दिया है, उसमें से आप कोई भी क्वारी है तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। एमएसएमई का हमारा ऑफिस जो है आईटी रोड के सामने है। थैंक यू। Now, the floor is open for discussion.
Good afternoon. My name is Vinay. I'm from Ramrayan, Mumbai. I got a couple of questions. Before coming to this place, I was searching on the net about Agarwal. In the search engine, it does not show anywhere Tripura. It is always showing the Assam. So I think it's a very difficult to understand and explain to other people. If I'm talking with some exporter, that it's a Agarwal is from Tripura. Question number 2, I think I was listening to the presentation of Rohit sir. He was talking about price variation. It could be a 2 lakhs, 4 lakhs, 6 lakhs. Yesterday I was discussing with the few sellers. Is any component of analysis has been made for agar gold? So we can differentiate the different type of oils. Question number 3. Even if I have to call this as a sample, can I get the material safety data sheets? Because freight and forwarder will not be collecting these oils. So these are the few questions, sir. Just to answer your question, number 1, regarding material safety data sheet, that will not be a problem. You come to us, we will help you out to make it. That could be done by us. That is not going to be a great deal. Regarding something about to decide about the price, as I've told earlier, even being a dark area, since no standard are available, it is difficult to decide, and that is the reason the things are happening. Everybody is saying, right from, as Mr. Rohit said, it very rightly pointed out, 3 lakhs to 2 crore. Truly speaking, this is not at all true. Any material in any part of the world cannot be for a 3 lakh a natural material, and the same natural material from the same lakh can be for 2.2 crore, which is practically not at all correct. 1. The standard would be one for the entire country. We are working on it. There would be one standard. Just making a little difference in processing will not at all going to lead our nation or our state anywhere. We need to be uniform. We need to be globally competitive in terms of the price, and only then we could able to survive. Every Tom, Dick, and Harry keep on saying कि I am doing by this way, I am doing by that way. मैंने थोड़ा गर्म किया था, मैंने थोड़ा इसको छौंका लगा दिया था, मैंने थोड़ा हीट किया था, और मेरा प्रोडक्ट अलग है. कुछ नहीं होगा. आप में से आधा 1-1 किलो बेचते रहोगे और कहीं नहीं पहुंचोगे at the end of the day. It has to be done systematically, uniformly across the nation. There should be one nation, one standard for agar oil, and that too with the optimized processing technology, make you globally competitive. Otherwise, our share is very less. It will become much more less. The other countries are having a quite different technology. Tomorrow they will have much more advanced, and we will be just ruled out. That is the way the things are happening. And if you say it is very expensive, be sure people will use it less. And the moment you make it more competitive, it will be more used. The market would be higher. So that is answer to your question. Probably the once the standard will come, Samdani, this will be done, but not right now. I'm Ashok Dalalagi. But you see, there are issues on price variations. There are issues connected with giving remunerative prices to the producers and reasonable price for the buyers. Now, my suggestion is that in tea industry we have tea auction standards. On the same line, we should consider having an auction system for agar oil, maybe once in a month or 1 day, so that all the buyers from across the world can come over. You give us COA, you give us GCMS, and let the be connected with some perfume evaluators. They will also evaluate the perfume and they will fix up a minimum price. On the basis of that, buyers can come and they can do bidding and the producer will get the maximum price. On the line of tea auction. Yeah, I think that's a very good suggestion, but everything at a particular stage of development. So while you have highlighted that need, it is definitely on our horizon,
And as we progress, I'm sure we'll. Thank you. Thank you for your suggestion. If there are no more questions, then I would request the chairperson of this session, Honorable DCCF sir, to conclude and the deliberations. Thank you, Deepa, for that. And I must also thank all the presenters for excellent presentations. Mr. Rohit said in the first presentation, he has brought out very nicely the practicalities of the market situation, and that is something the growers have been grappling with, and also our Tripura growers are not in direct contact right now with the perfumery market, but I think that is going to be, it is going to become more reality in the coming days as contacts between the buyers and the growers increase, which is the purpose of this program today, buyer seller meet. So he has very nicely summed out the potential of agar oil in fragrance, the market orientation, and what is required is the standardization of the agar oil, which has also been highlighted by Dr. S.V. Shukla, and the FFDC Kannauj is already working on that. And once this standardization of agar oil happens, it will, I think, address the issues that have been raised by Mr. Rohit Seth. The other issue that Mr. Rohit Seth has highlighted is the need for a laboratory. We, as Tripura Forest Department and Government of Tripura, and from the industries and commerce side also, we are aware of that. And as I mentioned also yesterday during the keynote address, we are currently negotiating a project with the World Bank, the Element project. Deepa Madam here is the CEO for that, and as a part of that, we are going to address the different issues faced by the agar sector as well as the bamboo sector. It's a very big project currently being negotiated, about 1,770 crores. So, and one of the components in that under the Element project is going to be for establishing a state-of-the-art research facilities, laboratories, etc. for these products, for these sectors in Tripura itself. So I think that will adequately address that. Dr. S.V. Shukla, Director FFDC Kannauj, is already working very closely with the government of Tripura and specifically with the NEC Directorate. Mr. Praveen Agarwal is very closely working with them, and he has highlighted in his presentation the need for upgradation of the entire extraction process for agar oil. I've already discussed with him, and we have also agreed that he will send us a very quickly a small project for standardizing the methodology for this extraction for steam distillation, and once that is standardized, will also suggest to us the standardized unit that should be adopted by all our other growers of Tripura, and we hope that we will then present before the government of Tripura for a small project for upgrading all the distillation, all the oil extraction units of Tripura from the government side. So we will work out a scheme for that, and we will roll it out for upgrading the extraction processes with all the growers and businesses in Tripura. So the other thing highlighted by Dr. S.V. Shukla was also related to post-harvest technology, which is also currently right now at a poor level in Tripura. So we will be looking at ways and means of addressing it in the coming days, and also taking up specific interventions both from the NEC Directorate and also from the Industries Directorate. We'll be taking up these interventions. Mr. Praveen Agarwal, in his presentation, has highlighted the need for
diversification of different products from agarwood, and specifically the medicinal value, where more R&D needs to be done, and we would gladly welcome any further collaboration in this. We are already, as I mentioned, already in talks with Patanjali for the collaboration in this area, and of course we are open for any further collaboration as well. Other areas that were highlighted was the need for applications for agar products in cosmetics, agarwood tea, and also skin products and digestive health products like hydrosol. So these are all products from agar that need to be worked upon. They need to be standardized. We need to get them to the market, to the customers, so that we can diversify the agar produce from Tripura, and therefore build the sector in a very structured manner. Lastly, the last presentation was by Mr. B.P. Meena, Director MSME, who has highlighted the different investments available from the MSME Ministry for investment in the agar sector. The schemes were all highlighted by him, and he has also highlighted the different incentives available. In addition to that, my industry colleagues from the government of Tripura are also here with us. So in case any investors here would like to invest in Tripura, we are open. There are state schemes also in addition to the MSME schemes that have already been highlighted. And I assure you that from the government of Tripura side, we will definitely be supporting you in a wholehearted manner to ensure that we build up the agar sector in Tripura. And with these words, I would like to thank everybody, all of you for your patient listening, and all the presenters here on the dais, and the moderator for the excellent presentations. Thank you. Consider to be closed. Thank you. Thank you so much. Now, there is a small facilitation by TRPC, and we would request Mr. Rathi to come over the stage and do the honors, please. The TRPC would like to facilitate all the speakers, and we will hand over all the facilitations to the speakers of yesterday and today. So, Mr. Rathi, you can please take over. Thank you very much, ma'am. Well, on the behalf of TRPCL family, we want to felicitate the speakers and the resource persons who had taken part in this very crucial conference since yesterday and today. So I would request our Honorable Chairperson TRPCL and Minister of State, Madam Patal Kanya Jamatia ji, please come on the stage, and I will be inviting the resource persons and the dignitaries one by one, and a small token of love from the TRPCL family, the Forest Department, and the Government of Tripura, please. So I would request Mr. S.P. Yadav has left, I guess. Okay. Now, starting with Shri K.S. Sethi ji, the PCCF and HOFF, who has been the key person in mobilizing this wonderful event. Sethi, yes, I want it. Sethi sir, please. Well, this is a token of love. It is Risha, the traditional handloom from Tiprasa community. And this is a bamboo bottle. Yes, this is handmade. And this is a bamboo bottle
which is made of copper and which is like molded with bamboo. So the credit also goes to our managing director, Mr. Prasada Rao. Indeed, he is not over here. Now I would request Shri Parveen Agarwal ji, the most dynamic officer from the Forest Department, to come ahead and collect the token of love. Requesting Shri R.K. Samal ji, if he is present over here. Shri R.K. Samal, Additional PCCF, Department of Forest, Government of Tripura. Now next in line, Dr. V.G. Jenner, Additional PCCF, Department of Forest. Dr. V.G. Jenner. Madam Shrimati Vishweshwari Boga from Department of Industries, Government of Tripura, she is here. Okay. Dr. Gidima Das Krishna ji, Head of Northeast Desk, Invest India. Yes. Next is Shri Ashok Vardhan Reddy ji, Managing Director, New Leaf Natural, Hyderabad. Now I would request Miss Anu Joni, Northeast Desk, Invest India. Next in line, Shri Shashi Kumar ji, CCF Territorial. Shashi Kumar ji. Okay. Dr. KJ Singh from Council of Scientific and Industrial Research, NBRI, Lucknow. Then is Dr. Avinash Kanfade ji, CEO, JICA Project. Followed by Shri Shushil Verma ji. Then I would request Shri Rohit Seth ji, the President, Sugandh Vyapar Sangh, New Delhi. Shri Rohit Seth ji. Then Shri Shakti Vinay Shukla ji from FFDC Kannauj. And requesting Ms. Deepa Nair ji, CEO of Element Projects. This is a special guest, Dr. Renuka Thirgaonkar from Mumbai. If Renuka ma'am is over here, I would request her to come on the stage and please accept the token of love from the TRPC family, please. And I would request Dr. A.B. Pant ji from Council of Scientific and Industrial Research, IITR, Lucknow.
Then I would request Shri C.L. Das ji, CEO IGDC project. I would request Dr. Arun Chandan ji, Regional Director, RCFC, Northern Region, Ministry of Ayush, Government of India. Dr. Arun Chandan ji. Then I would request the Assistant Director for MSME, Mr. B.P. Meena ji, IEDS. Then I would be requesting Dr. Karan Garg ji to please come. Okay. I would be requesting Renuka ma'am to please come on the stage. We are waiting for you. Dr. Karan Garg ji. Now I would request Dr. Ratnagar Johri ji to please come on the stage. And finally, a token of love to Mr. Manish Agarwal ji from Bamboo Industries. Mr. Manish Agarwal ji. Since Madam is also one of the speaker, now I request our PCC of Mr. Sethi sir to give the welcome. I also request Dr. Kapil sir. These are Agar perfumes made by FFDC Kannauj. Another OSG to TRPC, Mr. Captain. Sir, Captain. And another token of love to Mrs. Rupa Madam, CII. Mr. Manish Agarwal ji, he has left. Okay. Mr. Rajesh ji, please. Thank you everyone. And after the lunch, the program will continue. And
really thanks to everyone for visiting Tripura from the core of our heart, that you have visited this place and you have been very much keen to invest in the state, which has a lot of potential. Thank you very much and see you soon. Small announcement, Mr. Ankur Ali from Agarwood Growers Association would like to make would like to felicitate Madam Padarkanna Jamatia. So we have a small facilitation from the Agarwood Association as well. This is from the Agarwood Association, madam. So there is one more facilitation for the PCCF, Mr. K.S. Sethi from the Agarwood Association. And to Mr. Agarwal sir, the Agarwood man in Tripura. How can you miss him? So the session closes for lunch and we will be back by 3:30 here. Not 3:30, 3 o'clock. It's 2 now. We'll be back by 3 and we'll have one more session to go and then we'll start the B2B and B2G details. And those who have